मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हुए और साथ ही राष्ट्रीय युवा दिन के तहत यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की ओर से आज स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्षितिज शीर्षक के तहत पतंगोत्सव आयोजित करवाया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की ओर से कई सेवाकीय कार्य किए जाते हैं। तब डांडिया बाजार में मौजूद जुम्मादादा व्यायाम स्कूल पर स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की ओर से आज काइट फेस्टिवल आयोजित करवाया गया। क्षितिज शीर्षक के तहत राष्ट्रीय युवा दिन और मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हुए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की ओर से ये काइट फेस्टिवल आयोजित करवाया गया था, जिसके तहत दिव्यांगों के लिए कार्यरत विभिन्न 12 संस्थाओं के 450 से अधिक बच्चे और जेवियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ITI की ट्रेनिंग लेने वाले छात्र भी शामिल हुए थे। ये सभी उत्साह से इस काइट फेस्टिवल के तहत रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हुए नजर आए थे। યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડા દ્વારા રાષ્ટ્રીય યુવા દિનની ઉજવણી અને સાથે સાથે આપણે જે આ ઉત્તરાયણનો માહોલ છે અત્યારે એ બંનેને સેલિબ્રેટ કરવા માટે આપણે દર વર્ષે જે સ્પેશિયલી એબલ્ડ બાળકો છે જે વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે એ બધા બાળકોને ભેગા કરીને ક્ષિતિજ કાઇટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરીએ છીએ। આજે એની અંદર અહીંયા જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરમાં 12 જેટલી સંસ્થાઓ જે સ્પેશિયલી એબલ્ડ છોકરાઓ સાથે કામ કરે છે એ બધી સંસ્થાઓમાંથી 400 થી 450 બાળકો અને સાથે સાથે ઝેવિયર ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જે બાળકો ITIની ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે જેને પણ યુનાઇટેડ વે સ્પોન્સર કરે છે એ જરૂરિયાતમંદ યુવાઓ પણ આપણી સાથે આજે જોડાયા છે અને ભેગા મળીને આજે એ લોકો ઉત્તરાયણ તો સેલિબ્રેટ કરશે, સાથે સાથે ઊંધિયું, પૂરી, જલેબીનો પણ આનંદ માણશે, મ્યુઝિક ને બધું એન્જોય કરશે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।